Euler formula for two variable, that is, this is the formula, that is f of e1 plus h e2 plus k. It will be f of e1 e2 plus h into dou by dou x plus k dou by dou y, f of e1 e2 plus h, same thing, the whole square upon 2 factorial f of e1 e2 cube and so on. So this was the formula. So now this is called last term and this is called Lagrange form of last term. So let us just quickly write that remark. The last term, that is 1 upon n plus 1 factorial and h into dou by dou x plus k into dou by dou y raised to n plus 1, and f of e1 plus theta h comma e2 plus theta k is the remainder term, is the remainder term and is called as Lagrange form. Lagrange's form of remainder. Okay. एंड अगर वन वेरिएबल से रिलेट करो तो सी इन वन वेरिएबल क्या था, इन वन वेरिएबल एफ ऑफ ई प्लस एच को हम लोग रिलेट कैसे करते थे, दैट इज एफ ऑफ ई प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, करेक्ट, एंड एफ डैश ऑफ ए का फॉर्मूला इट वुड बी एफ ऑफ ई प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. So what do you mean by this? F of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, which indicates that approximation of f near a is done in the direction of tangent, in the direction of tangent to the curve, to the curve at f of a. Okay. This is just approximation in the direction. Same अगर in two variable लिया तो if you take only a linear part, that is approximate with linear part, then this will be what, in two variable just only two part, f of e1 plus h comma e2 plus k, this will be approximated with f of e1 e2 plus h into dou f by dou x e1 e2 plus k into dou f by dou y e1 e2. एंड इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने डबल इंटीग्रल का डेरिवेटिव्स कैसे निकाला था, दिस वाज द फॉर्मूला, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज देयर सब्ट्रैक्शन एंड दैट इज दिस वन इज क्या बोलते थे इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, h इंटू की का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट डेल एफ, करेक्ट. So note one thing, note that this dou f by dou x comma dou f by dou y uh, indicates the normal, indicates the normal to tangent. Normal to tangent. Tangent plane of the surface at E1 E2, and hence approximation to made will be made along tangent plane. Same thing in the previous one जो हम लोगों ने लिखा था, that is
इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द कर्व एफ ऑफ E1 E2. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हेंस approximation to f of E1 plus h comma E2 plus k is made along the tangent plane to the surface at E1 E2. Okay, yeah. तो अगर डिग्री 2 का लिया तो क्या आएगा, इट विल बी एट दिस प्लेस, एक और टर्म आ जाएगा दैट विल बी एच स्क्वायर, वो भी लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो रिमेंबर दिस फॉर्मूलेज. Tangent polynomial of degree 2 a scalar field of two variable is obtained by this degree 2 na, so it will be f of E1 plus h comma E2 plus k. It will be approximated with f of E1 E2 plus h into plus same thing जो उधर था, h dou f by dou x plus k dou f by dou y. That's it. ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. This is first, and the next guy will be that is actually in general अगर लिखो तो वो h स्क्वायर रहता है, ये रहता है ना, that is h into dou by dou x plus k into dou by dou y the whole square upon 2 factorial of f of E1 E2. करेक्ट. चाहिए तो इसको भी अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो यू जस्ट रिमूव दिस एंड f of E1 E2 ऐसा. Okay, so this is degree 2, so we are omitting the higher terms of the Taylor expansion. So इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. if in the question they are asking of degree 2 तो तुमको ये कंसिडर करना है. करेक्ट. और see, this was E1 plus h E2 plus k ना. If somebody asks you what about this f of xy, that means if you substitute x equal to E1 plus h and y equal to E2 plus k, correct, so what will be my new formula? That is f of xy, that is approximated with f of E1 E2 plus what will be my h then? H is x minus E1, k will be y minus E2. Okay, let us substitute it here. So it will be plus x minus E1 dou by dou x plus y minus E2 dou by dou y of function f of E1 E2 and plus the next guy is सेम h की जगह पे x minus E1 dou by dou x plus y minus E2 dou by dou y the whole square upon 2 factorial into f of E1 E2 when they are asking for degree 3. करेक्ट. एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन तो तुमको समझेगा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मतलब सिर्फ अप टू दिस टर्म यू हैव टू टेक. तो वो भी लिख लेते हैं. दिस इज फॉर डिग्री 2, रिमेंबर दिस. एंड इफ दे आर आस्किंग दैट
for linear approximation. That is, उसमें क्या आएगा f of e1 plus h comma e2 plus k. It is approximated with f of e1 e2 plus h dou by dou x plus k dou by dou y, f of e1 e2, correct? Now next thing, I want to substitute x equal to e1 plus h and y equal to e2 plus k. So what will be my h? It will be x minus e1, and what will be k? It will be y minus e2. That's it. Let us put it there. So once you put it there, so क्या आएगा ये? This will be f of x y. That will be approximated with f of e1 e2 plus x minus e1, and just मैं multiply करता हूँ function को. It is dou f of e1 e2 with respect to dou x plus y minus e2 dou f of e1 e2 with respect to dou y. That's it. So this is your linear approximation. That was your quadratic approximation. Degree 2. That is approximation. Okay. Now in the question they may be mentioning कि कौन सा approximation चाहिए तुमको. Suppose let us take one example. Let f of xy is equal to, say, sin xy plus log of x plus y. Log of x plus y. Suppose this is the function. Find the Taylor polynomial. Find the Taylor's polynomial of degree 2 about the point 1 comma 0, about 1 comma 0. So yes, so you know how to do that, correct? What is the formula here? First this is the function. तो function का partial derivative लेने का. dou f by dou x क्या आएगा? dou f by dou y क्या आएगा? Just tell me quickly. What is dou f by dou x? डिग्री 2 चाहिए ना, तो मेरे को और लोग चाहिए. d2f by dou x square, dou2f by dou x dou y. Next, dou2f by dou y square. These are the 5 things you require now. What is fx? fx derivative क्या आएगा? Yes. What is fx? Sin का derivative cos, so it will be cos xy, and xy का derivative, so it will be y cos xy, correct? Plus log, it will be 1 upon x plus y. That's it. हो गया ये. यहाँ पे क्या आएगा? with respect to y किया तो it will be x cos xy plus 1 upon xy, x plus y. Next you have to differentiate again with respect to x, that is double derivative with respect to x. तो c cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये माइनस आ जाएगा. So it will be minus y square sin xy, and इसका डेरिवेटिव 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1 upon x square, minus 1 upon x plus y the whole square. And same here, यहाँ पे क्या आएगा? It will be minus x square sin xy minus 1 upon, this will be x plus y the whole square, correct? And what is this? इसका with respect to y किया तो क्या आएगा? That is cos xy and minus, it will be minus 1 upon minus, no, actually here it will be u into v rule. With respect to y,
Yeah, it will be u into v now. So this multiply by this minus it will be xy sin xy, and again last part is minus 1 upon x plus y the whole square. Yes, because this is in the dou f by dou x अभी with respect to y किया तो it will be u into v here. So I'm just writing first this and derivative of this, that is 1, and then this as it is, y as it is derivative it will be xy, so it is minus xy. So this is we are having now. Now put it in the formula. What is the formula? जो भी तुमको फॉर्मूला याद हो, इट इज़ बेटर तो पहले वो वाला यूज़ करते. देखो एफ ऑफ ई वन प्लस e1 plus h comma e2 plus k, that is equal to that is approximately equal to भी बोलो या equal to बोलो, since they are asking about degree 2, तो हम लोग approximately बोलते हैं. that is f of e1 e2 plus h in क्या है h dou by dou x plus k dou by dou y of f of e1 e2. करेक्ट, डिग्री 2 चाहिए था ना, तो वो टर्म भी आएगा e1 e2 प्लस नेक्स्ट गाय इज h dou by dou x plus k dou by dou y the whole square f of xy divided by 2 factorial. Correct? Yes. f of e1 e2, sorry, this should be f of e1 e2. That's it. Now let us substitute. But before substitution I just have to find, ये हम लोगों ने इन जनरल फंक्शन पे निकालना ना, अभी 10 पे निकालना पड़ेगा. दैट इज़ इसमें 10 पुट करना पड़ेगा. तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. सो ये क्या आएगा, व्हाट इज़ माई e1 e2, दैट इज़ 1 and 0 ना. So it will be f of 1 plus h comma k, that is approximately equal to f of e1 e2, that is f of 1 0 plus यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, that is f of 1 0 plus h into ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं इसको, it will be h into dou f of 1 0 upon dou x plus k into dou f of 1 0 upon dou y. ये हो गया. यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ यू ओपन दिस ब्रैकेट दिस विल बी एच स्क्वायर, क्या आएगा ये, एच स्क्वायर डो डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1 0 अपॉन डो एक्स 2. करेक्ट, एंड डिवाइड बाई 2 भी आएगा, प्लस एच इंटू की डो 2 ऑफ एफ अपॉन डो एक्स डो वाई एट 1 0 plus k square upon 2 dou 2 of f upon dou y square at 1 0. That's it. Done. Now let us substitute. Once you have to substitute, last में h को भी substitute करना पड़ेगा. हाँ, this 1 plus h and k plus h. You have to put x equal to 1 plus h and y equal to k. This is what you have to substitute again. So that will be your final formula. और यहाँ पे 1 0 और सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा. Correct? Let us do that. So here it will be in the left hand side, it will be f of xy and that is approximately equal to f of 1 0. पहले f of 1 0 निकालते हैं. f of 1 0 मतलब यहाँ पे sin 0 is 0 and that is log 1 ना, तो log 1 तो वो भी 0 हो गया, तो ये गया, फर्स्ट टर्म इज 0, दैट इज 0 प्लस h की जगह पे क्या पुट करना है अपने को, x माइनस 1 ना. व्हाट इज h इज x माइनस 1, that is x minus 1 into dou f by dou x, but at that point 1 0 हमने निकाला है. 1 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, दिस विल बी cos 0 0, ये हो गया, दिस इज 1, so it will be just 1. करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y सेम एज की, तो यहाँ पे आएगा y एंड dou f by dou y एट सेम 1 0, तो इधर क्या आएगा देखो 1 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे इट विल बी 2, तो इट विल बी 2y इंटू 2, ये हो गया
प्लस एच स्क्वायर मतलब क्या, इट इज एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर. Yes, it will be x minus वन the whole square into डबल डेरिवेटिव ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ x, ये इसका वैल्यू देखते हैं क्या है. या 0 1 पुट करते हैं, 1 0 पुट करते हैं. 0 पुट किया ये गया, 1 पुट किया तो ये -1 आएगा. इट विल गिव यू -1. इट विल बी -1 multiply by -1 and divide by 2 also, correct? Divide by 2. This is done and next is ये हो गया. नेक्स्ट h इंटू की. वट इज h इंटू की? दैट इज x माइनस वन इंटू वाई मल्टीप्लाई विथ होम, मल्टीप्लाई विथ डो एफ ऑफ डो एक्स वाई. नो ये क्या था, 1 0 पुट करते इसमें, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1 तो दिस विल गिव 0, तो ये 0 आ जाएगा. एक्स वाई इंटू 0, so this is gone and last term will be y square upon 2 into f डबल y का 1 0, इस पे 1 0 पुट करते हैं. so it will be -1, so ये गया साइन है 1 0, it will be -1, so it will be multiply with -1. so that's all. So what is your final answer? What is approximate? so let us expand, we can expand this, we expand करेंगे स्क्वायर. हाँ, in the first term you are getting this is approximately equal to x minus y plus 2y, 2y, and here it will be x minus y the whole square, no, and minus y, so it will be, that is minus x minus 1 the whole square upon 2 minus y square upon 2. and चाहिए तो पूरा expand करो तभी भी चलेगा, और if you keep it like this only then also it is okay, because now it is in degree 2. do you see that? Now it is in degree 2 everything. So we have approximated the original function into a degree 2 function, degree 2 polynomial. In the question they were asking find the Taylor polynomial of degree 2 about that point, correct? Yes. एक linear का भी कर लेते हैं. Say f of xy equal to suppose say x root y. Find the linearization. Linearization, that is lxy of the function at the point at 1,4. What do you mean by lxy? वही जो linear term है ना, जिसको lxy बोलते हैं. Yeah, this term is called lxy, this whole term. Linearization. चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ lxy equal to, यहाँ पे भी ये मेरा lxy. Okay, so let us do that. You know the formula, but first thing is do the partial derivative. Dou f by dou x क्या आएगा इधर, dou f by dou y. These two things only we want here, correct? And now put it in the formula. What is L of xy का formula? I am directly writing L of xy. So it is f of 1,4 plus x minus 1 into dou f by dou x, 1,4 plus y minus 4 into dou f by dou y into 1,4. This is what you are having. Let us substitute and solve. पहले fx निकालते हैं. fx क्या आएगा? It will be root y
एंड एफ वाई क्या आएगा, रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सो इट विल बी x/2 रूट वाई. बट कौन से पॉइंट पे चाहिए, 1/4 पे. सो लेट अस पुट एफ ऑफ 1/4 क्या आएगा, 1/4, सो इट विल बी 2 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1/4 यहाँ पे लिया तो ये क्या आएगा अगेन 2 प्लस वाई माइनस 4 इंटू एफ बाई डो वाई, that is 1/4. That's it. This is the final answer. You can solve it. It will be क्या आएगा ये, it will be 2x और ये गया प्लस y/4 -1. This is your linearization. That is, you are approximating the original function to a linear function. That's it. Okay. So in this case, let us do one more problem. That is, expand this function, that is xy square plus 3xy minus 5 in powers of x minus 1 and y plus 2. What do you understand by this question? Expand this function in power of x minus 1 and y minus 2. It clearly indicates that you want to calculate the Taylor expansion at the point y plus 2 बोलता हूँ, at the point 1 comma minus 2, correct? So that means let us just write it, that is f of xy है ये. So this is f of xy is xy square plus 3xy minus 5 and at 1 comma minus 2. This is what you want to have, correct? So up to degree 2 किया तभी भी चलेगा. यहाँ पे मैं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो तभी भी यू जस्ट ऑलवेज डू डिग्री 2. डिग्री 3 का बहुत ही लेंदी हो जाएगा, so you will always do till degree 2. So what is the formula? First let us write the formula. F of xy that will be equal to f of 1 comma minus, डायरेक्ट मैं f of xy लिख रहा हूँ ना, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. प्लस ये क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एफ एक्स एट 1 comma minus 2 plus y plus 2 into fy at 1 comma minus 2. These two things are done. What next now? 1 by 2 factorial into, I'm directly expanding. Think about it once again. X minus 1 the whole square fxx at 1 comma minus 2 plus it will be 2 times x minus 1 y minus 2 y plus 2 into f of xy at 1 comma minus 2 plus what is the last guy, y plus 2 the whole square into fyy at 1 comma minus 2. These three things, these all things you have to find. That's it, and substitute and get the answer. पहले fx निकालो, fy निकालो, and at that point निकालना पड़ेगा, and just substitute in this equation. You will be having a equation in terms of x minus 1 y plus 2 and power of x minus 1. Do you see? That's it. So this is how you have to solve. Whenever any question is given, you have to do that only. Okay. So in the next lecture, we'll start with differentiability of vector field. Now I would like you to revise स्केलर फील्ड का डिफरेंशियबिलिटी जैसे डिफाइन किया था पूरा देख लो एक बार फिर से. Go through the notes,
go through the lecture recording, you'll get to know कि how what are the similarities are there in that. Just उसमें हम लोग को linear transformation चाहिए था. That linear transformation was in scalar, but here there will be again a linear transformation that will be in vector. That's it.